एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तन्ने खुद है। जोर लगा, बाहर निकल। आज मैंने योगा अपने घर पे किया बिकॉज संग्राम कहीं बाहर गया है सुबह सुबह, सो द रूम वॉज मतलब दिस एरिया वॉज खाली, अदरवाइज ही यूजली यूजेस दिस एरिया। आई गो टू द जिम, बट वो जिम भी इतना गंदा है और मुझे एसी में योगा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पसीना ही नहीं आता। योगा हैज़ टू हैपन इन ओपन एयर, मगर वहाँ पे एसी चालू करना पड़ता है बिकॉज द विंडोज़ आर सील्ड। दे शुड हैव ओपन विंडोज़ यार इन योगा रूम्स। आप एसी रखो मगर योगा रूम्स के अंदर आप ओपन विंडोज़ रखो, सो दैट जिनको एसी नहीं चाहिए वो ओपन एयर के साथ वर्कआउट कर सके, योगा कर सके। एनीवेज मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर अबाउट सम महाराज जी, आई डोंट नो हिम। मैं ट्विटर पे देख रही थी, वो ट्रेंड हो रहे थे, सो आई जस्ट थॉट लेट मी हियर हिम आउट. He apparently says that he has watched the entire speech of Rahul Gandhi ji in the parliament, and Rahul Gandhi ji did not call the entire Hindu race Hinsak, but said that those people who say that they are Hindus, that is the BJP politicians, they are Hinsak, and Hindu is basically not Hinsak. So basically you have to understand why I shared that video. मैंने वो वीडियो इसलिए शेयर किया बिकॉज हम फेस कर रहे हैं लॉट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज़, एडिटेड वीडियोज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन. व्हाट्सएप is a medium of spreading such kind of information. I was a victim to it 2 years back when I made a video on Motilal Nehru's father. Yeah, on Motilal Nehru. Yeah, that is Jawaharlal Nehru's father. So the whole thing is, हमें व्हाट्सअप यूज़ करना अच्छा लगता है बिकॉज वी अंडरस्टैंड नो एक्सेसिबिलिटी, कंफर्ट लेवल फीचर ऑफ इट, बट व्हाट्सअप बिकॉज ऑफ द QR code being signed up and WhatsApp API and all those CRM and all those tools, business tools that have been developed to kind of market your business, WhatsApp has become like a robot algorithm. You don't know whether it is chat GTP talking to you, whether it is a human being talking to you, whether it is some other person talking to you. आपको पता ही नहीं चलता, or whether it's bot reply, you have no idea. Use your common sense. Try to understand because WhatsApp पे ऑडियो मैसेजेस इंसान ही भेजेगा, जो मैसेज आएंगे वो कोई भी टाइप कर देगा. So जब ऑडियो मैसेज आता है आपको किसी बंदे का, then kindly believe that. Otherwise WhatsApp messages तो सभी टाइप कर रहे हैं using various kind of softwares and this and that. तो मैंने वो वीडियो इसलिए शेयर किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दैट वीडियो. इट इज़ माई प्लेटफॉर्म. That does not make me anti-BJP and pro-Congress. That does not make me anti-Congress or pro-BJP. I have maintained a neutral point of view towards all political parties. मेरी leaning हो सकती है एक political party की तरफ, but मेरा point of view neutral रहेगा towards the betterment of this country. यहाँ पर हिंदू को लॉट ऑफ टाइम्स एक वर्ड से कनेक्ट किया जाता है, विच इज़ HI whatever. So now that is because a Hindu never takes a stand for themselves. अगर हिंदू अपने लिए स्टैंड लेता तो हिंदू कभी कन्वर्ट नहीं होता. ओके, तो हमारे देश के अंदर जो हिस्ट्री मुझे अभी समझ पड़ी है, एज पर वट एवर इंफॉर्मेशन, बुक्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, जनरल लिंक्स, वट एवर the kings and the queens like Rani Lakshmi Bai, Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji Maharaj, all these legends have been fearless, have been courageous. But लो स्ट्राटा पे जो हिंदू है वो कन्वर्ट हुआ है. तो जब वो कन्वर्ट हुआ है, वो कन्वर्ट इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर लगा है. दैट हिंदू वॉज नॉट fearless, that Hindu was not courageous, that is why they got converted. Their women were raped and that is why they got converted. The men were killed, that is why the women got converted. Once they got converted, their children were born in that religion only. Their children obviously assumed the new religion. So मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, the basic act of giving in, of being a coward, that act needs to be addressed अगर वो कहीं भी exist करता है हिंदू रेस के अंदर, because standing up for one's rights, standing up for one's religion is not an act of violence. Okay,
How you stand up in today's time depends. Rani Lakshmibai के time पे courts नहीं थे, ना Britishers were going to the court. Now she could go to the court to defend herself and her Rajya. They had to go to war. They had to fight it out in the battlefield. But today's time, we can go to the court. We can fight our battles in the court. There is more of a psychological war. There is more of an intellectual war than war on the streets. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि लोगों को स्ट्रीट के ऊपर भी आजकल फाइट करनी है. वो जैसे वो एग्जाम्पल था निहांग सिक्स का, जो पंजाब में एक शिवसेना के लीडर को अटैक कर रहे थे. सो देर आर सर्टन पीपल हु वांट टू डू ऑल दीज स्ट्रीट फाइट्स, बट देन देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट टू टेक देयर फाइट्स टू कोर्ट. तो मेरी एडवाइस सबको यही है कि हिंदू can have all shades, because Hindu is a human being. I would not like the Hindu to be a coward. I would like a Hindu to stand up for themselves, stand up for what is right for themselves, for their children, for their future generations. Standing up for oneself is not an act of violence. Giving in to a invasion is an act of cowardice. मगर हमारे देश के अंदर जब हिंदू अपने लिए खड़ा होता है तो उसको हिंसक बोल दिया जाता है. जब कोई दूसरे रिलीजन का इंसान अपने रिलीजन को डिफेंड करता है बाय स्लॉटरिंग अदर पीपल, देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी बार्बेरिक. बहुत डिफरेंट वर्जन्स है, बिकॉज इतने सालों से हम ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, बट हमारा एक थॉट प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा था. सो आई शेयर दैट वीडियो ऑफ दैट साधु जी जस्ट बिकॉज टू पुट कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू आउट देयर, बिकॉज आई एम नॉट बायस्ड ह्यूमन बीइंग. बट एक हिंदू हिंसक भी हो सकता है, एक हिंदू कावड़ भी हो सकता है, बट आई वुड वॉन्ट अ हिंदू टू बी मैच्योर्ड, बैलेंस्ड, because we have a lot of good history behind us. We have tolerated a lot of invasions, and we are the oldest religion. So I would want us to be mature. I do support a Hindu nation, but I support a Hindu nation without violence. I would want to have a Hindu nation by law. Yeah, that's my thought process, because I'm an educated woman. I believe we need to do what we need to do for the greater good of the society. Okay, that's my Mali. I just need to come back. So that's about it. मैं इस शादी वादी में जाके इतना बोर हो जाती हूँ, but I did my bit because Sangram was like, let's go. I was like, okay, fine, let's go. Hopefully I should get my pictures soon and I'll share it soon. Okay, bye. Time to make the website rock. Mr. Riaz, I have figured out delivery via Borzo. I just want you to understand that in your own website, if I'm trying to send an order to one of my actor friends, one of my husband's actor friends, then the drop-off address closing hour is 4 p.m. and opening hours is 9 p.m. So just sort this out, because I'm sending it from my address. I've booked it at 1. I booked it from 1 to 2. Put my number. So the closing hour is 4 p.m. and again opening hour is 9 p.m. So means the next delivery to this address would be 9 p.m. Just clarify this. Otherwise for this we don't need to do a Google Meet, but we do a Google Meet if you want to clarify this, because rest I've understood. But now on my Borzo main page, this is showing status plan. We will assign a courier around 8:30. Now why 8:30? I have given a slot between 4 to 5 now. Arrival time 10:30. By 10:30. What is wrong in my... Did I feed the order correct? मैंने information healthy hustle के पेज पे डाली और जो बोर्जो के पेज पे आई wrong ना. जो मैंने information healthy hustle के पेज पे टाइम स्टैम्प की डाली और जो बोर्जो के पेज पे आई उसमें गड़बड़ है. So now on the website it charged me that much. See, this much it charged me. Okay. But it was not a complete address. So I went to Borzo and I'm editing it. And now you are asking me for more money. Okay? So this is like hidden information. Okay? Something is wrong in your system, or you work like that way, Borzo? You work like Kotak Bank?
doing all this drama. So now the price has changed to 70 rupees. Wow.